हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ अकेडमी। तो आज हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे। जीरो इंटू इन्फिनिटी एंड जीरो की पावर जीरो, इन्फिनिटी की पावर जीरो एंड वन की पावर इन्फिनिटी। तो जो रिमेनिंग हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म है, हमने जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हमने डिस्कस कर चुके हैं वो जीरो अपॉन जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो थ्री इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास सेवन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स थे जिनके हमें लिमिट्स को कैलकुलेट करना था। तो आइए आज जो हम पढ़ेंगे दैट इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ जीरो इंटू इंफिनिटी। तो यू कैन जस्ट हैव इनडिटरमिनेट फॉर्म, नेट फॉर्म जीरो इंटू इंफिनिटी, ये फॉर्म हम पढ़ेंगे। सो इस फॉर्म को हम बेसिकली इस तरीके का कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, तो जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है, दिस इज योर एफ एक्स into gx के फॉर्म में। ओके, when you are taking the limit, तो लिमिट ऑफ दिस x टेंडिंग टू a ऑफ fx, इसकी लिमिट हमारे पास जीरो है। एंड द लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a of gx is infinity। तो if you are taking reciprocal of it, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं accordingly, so you will get convert in 0.0। so this implies you can easily see this is limit x tending to a fx into gx is just equal to, you can just have limit looks like this, limit x tending to a of fx into, this is limit x tending to a of gx। okay, and this is your zero into infinity form। ओके, सो इसको हमें क्या करना है, इन द indeterminate ऑफ द फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटी इज ऑलवेज रिड्यूसिबल इन दिस फॉर्म जीरो अपॉन जीरो। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, या तो हम इन्फिनिटी जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट होगा, इफ यू आर जस्ट टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस साइन एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स डीएक्स, तो इट विल बी, क्योंकि ये जीरो है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन में आ जाएगा, है ना, तभी तो जीरो हुआ। तो यू कैन से कि अगर हमारे पास एफ एक्स का रेसिप्रोकल समथिंग फंक्शन हमारे पास एच एक्स हो जा रहा है तो वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये हमारा जीरो है तो अपॉन में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ओके, तो ये इन्फिनिटी था तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। अगर तुम जीएक्स को रेसिप्रोकल में ले लेते हो तो हमारे पास एफ एक्स तो हमारे न्यूमरेटर में जीरो है ही, ठीक है। ये जो dx है वो डी न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन जाएगा। ओके, तो इजीली वी कैन कन्वर्ट इन दिस जीरो अपॉन जीरो फॉर्म और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। एंड उसके बाद हमें क्या लगाना है, डीएल हॉस्पिटल रूल, टेक द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डिन्यूमरेटर। ओके, so we can reduce in 0.0 on or infinity upon infinity by replacing one of the given function by the reciprocal such that the value of the given expression remains unaltered, है ना। जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो ना बदले और उसका रेसिप्रोकल लेके। तो एक एग्जांपल के साथ करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं। आई एम टेकिंग द एग्जांपल। तो एग्जांपल इज व्हाट, दिस इज evaluate this is limit x tending to 1 sec of pi by 2x। ओके, एंड दिस इज log ऑफ x। यहाँ पर देखिए टू फंक्शंस का प्रोडक्ट के फॉर्म में चीजें लिखी गई है। ओके, तो यू आर क्लियर व्हेन यू आर एक्सटेंडिंग टू infinity, when x tending to 1, sorry, here x tending to 1, so this sine pi by 2x will be tending to sine pi by 2, and that is your tending to infinity, you can say as this x tending to 1। and similarly यहाँ पर जो log x है, log x will be tending to 0 as x tending to 1। हम क्लियरली देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब दिस इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म, है ना, इस तरीके का हमारा फॉर्म है।
So here we can say solution. So here you can say here the expression, where the expression is of the form infinity into 0, but we can write in this form also. तो यहाँ पर हम इस लिमिट को लिखने जा रहे हैं, दिस इज योर लिमिट x टेंडिंग टू 1। तो हम क्या करने वाले हैं, जो sec पाई बाई 2x है, इसको अगर हम डी न्यूमरेटर में भेज देते हैं तो डी न्यूमरेटर की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। और अपर साइड में 0 था ही ऑलरेडी, तो ये कैसा हो जाएगा, 0/0 फॉर्म। तो यू कैन इजिली राइट दिस इज sec पाई अपॉन 2x into log of x. You can easily write like this. This is limit x tending to 1, and this is log x को न्यूमरेटर में रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई दिस इज योर sec ऑफ पाई बाई 2x। ओके, तो हमारे पास जब सॉरी 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 sec cos में बदल जाएगा, इट विल बी इन cos। ओके, तो sec जो है डी न्यूमरेटर में जाएगा, तो इट विल बी इन cos ऑफ cos पाई बाई 2x। एंड यू नो दैट cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो नाउ इट इज 0/0 फॉर्म। हमारे पास फॉर्म क्या थी, दिस इज इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म थी, बट इसको हमने इन्फिनिटी को रेसिप्रोकल ले लिया, तो उसको डी न्यूमरेटर में हमने उस फंक्शन को भेज दिया, दिस साइज सेक को हमने डी न्यूमरेटर में भेज दिया, एंड वी गेट 0/0 फॉर्म। ओके, so now you can just apply the limit or derivative। first we apply the, क्योंकि अब हमारे पास 0/0 फॉर्म हो गया, तो आसानी से हम हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम टेकिंग द डेरिवेटिव, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 1। तो जब हम इसका log का डेरिवेटिव लेते हैं तो इट विल बी 1/x डिवाइडेड बाई cos का होता है माइनस का साइन पाई अपॉन 2x। ओके, एंड इनटू, ध्यान देना, पाई बाई 2 हमारे पास आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ 1/x, बिकॉज दिस इज डेरिवेटिव, अब वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2x। तो 1/x का डेरिवेटिव हमको पता है क्या होता है, दिस इज 1/x फॉर -1, so you will take -1 outside and it will be x power -2। it means -1 है ना, तो it will be -2, so it will be -1/x²। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेरिवेटिव बना, दैट इज व्हाट, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 1, एंड दिस इज 1/x डिवाइडेड बाई -π/2 साइन π/2x, ये हुआ, और साथ में इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, दिस इज -1/x²। ओके, सो यू कैन चेक, दिस इज माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी व्हाट, एंड इस x से एक x कैंसिल कर सकते हो और ये x ऊपर चला जाएगा, तो यू विल गेट दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 1, दिस इज x अपॉन माइनस और माइनस प्लस, तो इट विल बी π/2, तो 2 को ऊपर भेज दीजिए, रिमेनिंग पाई इन डिनोमिनेटर, एंड दिस इज साइन ऑफ π/2। तो यू कैन सी कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है, दिस विल बी टेंडिंग टू 1, and this denominator will be tending to this sin π/2x will be also tending to 1। तो हम इजीली लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, तो दिस विल बी 2 into 1 डिवाइडेड बाई दिस इज पाई इंटू, एंड साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 2/5। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर वैल्यू ऑफ द लिमिट, है ना। कौन सी लिमिट थी, दिस इंप्लाइज, यू कैन से द लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1, this is your sec of π/2x, and this is log of x, okay, is just equal to 2/5 by using the DL hospital rule, and we converting infinity into 0 form in 0/0 form। ओके, तो ये एक हमारे पास टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, जिसको हम आसानी से 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करके डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते। ओके,
आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 की पावर 0। तो नाउ इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, एंड ये 1 की पावर इंफिनिटी। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के इंडिटरमिनेट फॉर्म है जिनको हम लॉगरिथमिक का यूज करके हम इनकी लिमिट्स को कैलकुलेट करते हैं, है ना। जब लॉग लेंगे तो इट विल बी कन्वर्ट इन समहाउ जीरो, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म, कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट होके ये आपको रिजल्ट दे देते हैं, वी कैन एबल टू कैलकुलेट। तो थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। तो these type of, these types can be determined, determined by taking log। तो इस तरीके कभी भी तुमको इंडिटरमिनेट फॉर्म दिखे तो आपको लॉग का यूज करना पड़ेगा, और कैसे यूज करेंगे अभी कुछ प्रॉब्लम्स के साथ हम डिस्कस करेंगे, तो आपको पता हो जाएगा कि हाउ विल टेक द लॉग, हाउ वी विल कैलकुलेट द सच लिमिट expression, and such forms reducible to, such form reducible to the familiar form that is your 0 upon 0 और infinity upon infinity। ओके, सो आइए जरा एक एग्जांपल कर लेते हैं। कैसे करेंगे इस तरीके प्रॉब्लम्स को, एग्जांपल नंबर 1 ही है। तो इवेल्युएट, we have to evaluate this limit, this is limit x tending to 0, and this is your sin x power 10x, एंड यू कैन से कि यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन x विल बी टेंडिंग इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस tan x इज आल्सो इक्वल टू 0। तो इट मीन दैट दिस इज नथिंग, दिस इज 0 की पावर 0 फॉर्म, है ना, 0 की एक्सपोनेंट 0 फॉर्म। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So we are going to calculate this limit, calculating this limit x tending to 0, this is of sine of x the whole power 10x। Okay, so clearly you can say this is the 0 to power 0 form, है ना, this is nothing, this is 0 upon 0 to power 0 form। So if we take this is just limit, and taking this limit is just equal, हमें log लेना है ना, and then taking log on both sides। Okay, taking log on both sides। तो जब हमने log ले लिया तो you will get log of a is just equal to, you know that कि जब लॉगरिथमिक को हम लेते हैं तो हमारे पास जो लिमिट है उस पे कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वी कैन log will be changing in inside। So you can just have this is limit x tending to 0, this is log of sine of x the whole power 10 of x। I'm just taking log this। फिर log की जो प्रॉपर्टी है we use m की पावर n is just equal to n log m, ये हमने प्रॉपर्टी यूज करी। तो दिस implies you will have log of a is just equal to, this is limit x tending to 0, and here you will have this is tan x, and this is log of sine। When this logarithmic the sin x will be tending to 0 as x tending to 0, then this log will be tending to infinity।
and this tan x will be tending to 0. So clearly you can say this is of the form what, this is 0 into infinity form, जो कि अभी हमने देखा कि कैसे उसको किया जाता है, कैसे उसको हम कर सकते हैं, उसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी अब हम जो प्रीवियस हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म था उसका जो मैथोलॉजी था कि हम जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो जिस फंक्शन का हमें कन्वर्जन पता है कि उसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उस फंक्शन का हम यूज करेंगे, चाहे वो हम 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करें या फिर हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो व्हाट वी विल डू हियर, we simply take the log of a just equal to limit. You can see clearly when you taking the reciprocal, या you can say tan x को आप लिख सकते हैं 1/cot x, or when x is tending to 0 this cot x will be tending to infinity. So here you will have sorry, not x tending to infinity, tending to 0. This is log of sin x is divided by cot of it. We get, now you get the 0 infinity upon infinity form. अब हम इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, we take the derivative. So here this is log of a is just equal to what, and this limit x tending to 0, limit x tending to 0, derivative of log sin x, so it will be 1/sin x, okay, and sin x का होता है cos x, and here the derivative of cot x is minus cos x square. Okay, so you will have what, cos upon sin, it's cot, it will be limit x tending to 0, this is cot of x divided by minus of cos x square. Okay, so this is again 0 upon infinity upon infinity form, because cot x will be tending to infinity and cosec x is also tending to infinity when x is tending to 0. So it is again infinity upon infinity form. So we can again apply DL hospital rule. So this implies this is log of a is just equal to what, this is limit x tending to 0 and taking the derivative of cot x, it minus cos x square x divided by this is minus cos x 2 times cos x, फिर cos x क्या क्या होता है, cos x into cot x, वो भी माइनस का, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ cos x. Okay, so what you get from here, you simply get this is limit x tending to 0 and this is minus of cos x square of x divided by this is minus minus plus, this is 2 times cos x square of x into cot x. Okay, so you simply cancel out this and you will get what, this will get you minus times limit minus 1/2, you can say limit x tending to 0, और एक cot को ऊपर ले जाएंगे तो it will be tan of x. So when x is tending to 0, this tan x will be tending to 0. So minus 1/2 into 0, you will get 0 limit. Okay. So यहाँ पर जो right hand side limit आई है वो 0 आई है. It means that we are not calculating this limit. We want the limit a, है ना, a को हमें calculate करना है. So this limit x tend log a is just equal to log a, this implies log a is just equal to 0. तो यहाँ से अगर आप a निकालेंगे तो it will be base की power exponent चल जाएगा, that is equals to 1. इसका मतलब है कि जो a हमने माना था, a हमारे पास लिमिट की थी, क्या थी, जो कैलकुलेट करना था, this implies this limit x tending to 0 sin x का होल पावर tan x is just equal to 1. तो ये लिमिट हमारे पास 1 के इक्वल. क्लियर? तो समझ पा रहे हैं कि हमने क्या करा कि जो हमारे पास 0 के पावर 0 था उसको सबसे पहले हमने लॉग लिया, लॉग लेके उसको हमने कन्वर्ट करा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में, फिर उसको हमने कन्वर्ट करा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में, एंड देन फर्दर वी अप्लाइंग द डीएल हॉस्पिटल रूल, है ना, वी आर जस्ट अप्लाइंग बाय द
D L'Hospital. So you can say by D L'Hospital. Okay, so these are the answers for this. एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, लेट अस सी। तो अभी हमने जीरो एक्सपोनेंट जीरो ये हमने देखा, एंड जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं कि इन्फिनिटी की पावर जीरो इज देयर, इफ देयर इज ए इन्फिनिटी पावर जीरो, तो हाउ वी विल कैलकुलेट सच। तो एग्जांपल ही है आपकी टेक्स्ट बुक का। तो दिस इज एग्जांपल टू। इसमें क्या है, इन्होंने वी हैव टू कैलकुलेट, इवेलुएट। हम किसी भी प्रॉब्लम को पूरा लिखते हैं अच्छे से। तो आप भी जब नोट्स बनाइएगा तो प्रॉपर चीजों को एक बार लिख डालिए, अच्छे से कर डालिए, उसके बाद हम उसके रिविजन्स करिए, उसके प्रॉब्लम को सॉर्टली करिए। तो दिस इज लिमिट, वी हैव टू evaluate दिस लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू pi by 2, x tending to pi by 2, and this is nothing, this is your sec of x the power cot of x. Okay, so this is a limit x tending to pi by 2, and this is sec x the power cot of x. Okay, so what will be the solution here? So what will be the solution here? So we can see clearly, when you are x tending to pi by 2, this sec will be tending to infinity, and this cot will be tending to zero, है ना, cot will be tending to zero, because you know that the tan will be tending to infinity at pi by 2. Okay, so here it is nothing, this is infinity की power zero form. Okay, so we are calculating this limit x tending to pi by 2, and this is sec of x, and this is cot of x. Okay, so when you are just applying the limit, you will get this is nothing, you can just simply say infinity power zero form, this indeterminate form. तो इसके लिए सेम हमें प्रोसेस अपनाना है। इसके लिए भी हमें लॉगरिथमिक लेना है, और उसका यूज करके हम करेंगे इसको। तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज इक्वल्स टू ए, दिस इज इक्वल टू ए, जस्ट सी। Okay, so we're taking the logarithm on both sides, taking log both sides. Okay, so what you get from here, you simply get this is log of a is just equal to, this is limit x tending to pi by 2, and this cot will be in outside, and here you will get log of sec of it. So you can see this is 0, this is 0, and this is your infinity. So you get this is 0 into infinity form now. ठीक है, तो you can say this is 0 into infinity form. ओके, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है क्या, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म या फिर 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो इजीली इसको हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग दिस कॉर्ड। So this is limit x tending to pi by 2, and this is log of sec x divided by 10. So now it is nothing. This is of the form infinity upon infinity form. Okay. Next what we will do? अब हम इसको डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो हम अप्लाइंग द डीएल हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इट विल बी 1 अपॉन सेक ऑफ एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू 10। ओके, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस tan x, इट विल बी सेक स्क्वायर ऑफ इट। ओके, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, what you remains, you just remains, this is limit x tending to pi by 2, tan x divided by sec square of it. So this is remain, or you can see clearly
when this x tending to pi by 2, tan x will be tending to infinity, and this sec x is also tending to infinity. So it will be again infinity upon infinity form. और यहाँ पर हमने क्या अप्लाई करा है, डीएल हॉस्पिटल रूल. तो यू जस्ट मेंशन बाय डीएल हॉस्पिटल रूल. हॉस्पिटल रूल. ओके, इस तरीके से आप इसको लिख दिया करिए, मेंशन करना होता है. Okay, so next we can again apply the de L'Hospital rule, taking the derivative of numerator and denominator separately. So this is pi by 2, or tan का derivative is again sec square x. What is the derivative of this sec x? It will be 2 sec of x into, it will be sec x into tan. So you can see this will be cancelled out. So it remains only this is limit x tending to pi by 2, and it will be tan को ऊपर भेज सकते हैं, तो it will be cot of x and divided by 2, and this will be tending to 0. तो यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट आएगी, this implies this is log of a is just equal to 0, and this implies this a is just equal to e to power 0, and that will be equal to 1. तो ये सिंपली हमारे पास लिमिट जो प्रीवियस उसमें भी हमारे पास 1 ही लिमिट आई थी, तो ये भी हमारे पास लिमिट 1 ही आएगी. तो दिस implies this is limit x tending to pi by 2, and this is your nothing, this is sec of x whole power, this is cot of x is just equal to 1. ये लिमिट हमारे पास इक्वल टू 1. ठीक. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे प्रोसीजर है, कैसे हम चीजों को करते हैं आसानी से. बहुत इजी है, इट्स नॉट टू टफ. You can just follow the instructions and you can able to. Okay, next तुम्हारे पास 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म को भी पढ़ लेते हैं. तो लेट अस सी कि उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे 0/0 या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म में. सो दिस इवेल्युएट. तो एग्जाम्पल नंबर 3, इस टॉपिक का एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, टेक्स्ट बुक का नहीं. तो एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इवेल्युएट दिस लिमिट x tending to 0, this is cos of x की power cot square of it. Okay, so this we have. So let's solve. So limit x tending to 0, cos x into cot square x. So we are taking, we clearly see this is what, when x tending to 0, cos x will be tending to 1, and this cot x will be tending to infinity. So this is nothing, this is 1 to the power infinity form, and this is also an indeterminate form. So simply let, taking this a, इसमें भी हम लॉगरिथमिक का यूज करेंगे. देखिए लिमिट x tending to 0, and this is cos of x की power cot square of x. Okay, so taking limit on both sides. So what you get from here, this will be equal to log of a just equal to limit x tending to 0, और फिर हमारे पास cot प्रॉपर्टी ऑफ लॉग cot स्क्वायर एक्स हमारा आउटसाइड आ जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास log of cos x. Okay, now you can see clearly, you already know कि this will be tending to infinity, तो ये अभी भी infinity की तरफ टेंड करेगा, और this is tending to 1, then log x will be log tending to 0. Okay, so this is nothing, this is infinity into 0 form, या 0 into infinity form, जो भी आप कहना चाहो. तो
इसको फिर फर्दर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 0.0 या फिर log अपॉन log। तो हम यहाँ पर तो इसको रेसिप्रोकल ले नहीं सकते, हम इसको ले सकते हैं, cot स्क्वायर एक्स को हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस implies you can easily write this is log of a is just equal to this is log of cos of x, okay, divided by this is sin square, this is not sin, will be tan, cot का reciprocal tan, so log cos x divided by tan square of x, and this limit is tending to extending to 0, so you can see clearly this is now 0.04, ठीक। तो अगर 0.0 फॉर्म, तो we simply take the derivative, we can apply the DL hospital rule, so log a is just equal to this is limit x टेंडिंग टू 0, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/cos x, और cos x का फर्दर माइनस ऑफ साइन एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर ऑफ एक्स, ओके। तो दिस इज sec स्क्वायर ऑफ एक्स, tan सॉरी tan स्क्वायर एक्स था ना, तो दिस विल बी 2 tan x फर्स्ट, देन आपका tan का एक फर्दर होगा तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। So what you get from here? Let us see. This is limit x tending to 0, and this is minus of sine upon cos मतलब tan. So minus tan of x, okay, divided by this is 2 tan x into sec square of it. It means if you are just converting it, you will simply, और ये आया कैसे, by dl hospital, dl hospital, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास 10 से 10 कैंसिल एंड सेक ऊपर चला जाएगा, तो यू विल हैव दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2, एंड सेक का हो जाएगा cos, तो cos स्क्वायर, एंड व्हेन x टेंडिंग टू 0 देन cos x टेंडिंग टू 1 एंड इट विल बी इक्वल टू minus 1/2 into 1, so you will get minus 1/2 फॉर दिस, ओके। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट योर आंसर। आंसर ये किसकी वैल्यू आई है, लॉग ए की वैल्यू, और हमको क्या चाहिए, ए। तो आपको करना क्या है, जस्ट राइट दिस एक्सपोनेंट इन द राइट माइनस हाफ इन द एक्सपोनेंट ऑफ ई, है ना। तो यहाँ पर ए जस्ट इक्वल टू ई टू पावर -1/2, तो यू कैन सिंपली से दिस इज 1/रूट ई, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो दिस इज योर आंसर। तो दिस इम्प्लाइज जो वैल्यू है लॉगरिथमिक की, दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास लिमिट कैलकुलेट करना था जिस फंक्शन की, दिस लिमिट limit x tending to 0, this is cos of x, the power cot square of x is just equal to e to power minus half, yeah, you can say this is over, this is one, ओके। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 टू पावर इंफिनिटी, और तो हमने जो चार रिमेनिंग फॉर्म्स थे, जैसे कि 0 इंटू इन्फिनिटी, उसको हमने पढ़ लिया, 0 के पावर 0 है, या इन्फिनिटी के पावर 0 है, या 1 टू पावर इन्फिनिटी है। तो इस ये जो तीन लास्ट के हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, इनको हम लॉगरिथमिक को ले लेते हैं, उसके बाद वो 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म में बनेगा, फिर उसके बाद उसको 0/0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करके डीएल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको एक्सरसाइज, जो सेकंड एक्सरसाइज है चैप्टर की, वो सारी पूरी एक्सरसाइज एक एक सवाल करा देंगे अच्छे से, और वी हैव 25 प्रॉब्लम्स इन दिस एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा देंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स हैं कुछ 14, उनको भी करा देंगे, एंड देन वी मूव फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, ओके। तो होप कि आपको समझ में आ रहा है और चीजें आप कर पा रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग कर पा रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे हैं चीजों को, और
आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी कर लीजिए ताकि लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो और भी स्टूडेंट को शेयर करें, ताकि ये जो लेक्चर्स हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो सभी बच्चों तक पहुंचे और वो मैथमेटिक्स को सीखें। और ये 3 लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मोर इन्फॉर्मेटिव। हम एक एक चीज बारीकी से डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका जो मैथमेटिक्स फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत हो जाएगा अगर हम सारे लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। प्रॉपर तरीके मतलब कि आप एक एक चीज लिखते हैं, आप एक नोट्स बनाते हैं, आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हमारे साथ में, और साथ में आप सेल्फ से भी एक्सरसाइजेस को ट्राई करते हैं, तो आपकी जो मेच्योरिटी लेवल है सब्जेक्ट को लेकर वो बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। Okay, so we will meet in the next lecture. Thank you so much. Keep watching and keep learning mathematics from here. Thank you so much.